Hello everyone. Today I'll be discussing one of the important questions that is asked in GATE 2024 Computer Science. Okay, it is GATE 2024 Computer Science, and it is not in the first shift. It is shift 2. Okay, or second shift, or you can assume it is a evening or afternoon shift, not the fun shift. It is a afternoon shift. Afternoon shift. Okay, this question of compiler design. And it is its question is what's the chapter of the topic or the subject compiler design, or the topic compiler design, and chapter within compiler design, it is the parsers or parsing, you can tell parsing. And it is a bottom up parsing question. Within bottom up parsing, it is CLR, not CLR, actually SLR parser question. Now let's discuss the solution of it. It's very simple, quite simple. We need to know first of all what is s dash to dot is. So you have to compute the closure, and for that we have the grammar given. Okay, the grammar to be passed is this, and we need to just augment the grammar, augmented grammar. Okay, so using a dot operator, and this is the augmented grammar. The augmented grammar is uh, there already, and we have to just compute the closure. So first of all, we have to compute the closure, and then this I naught to s. Then we have to compute the symbols. Okay, the closure corresponding symbols to compute this go to move or the go to set of I naught for the s symbol. So now, sorry, mm, yeah. So augmented grammar. Okay, this is some problematic. Okay, so what I do, I simply take a line. Okay, I simply take a line and draw the line over here. Augmented grammar. So now go back. Yeah. So see here. So first of all, you do like this. In the box, write this first of all. S dash goes to S. And we are computing the closure. For the closure, you have to give a dot operator, dot symbol over here. S prime derives S. Okay. Now, this is the non-terminal to be expanded. Not if it is a terminal symbol, no need to write the production corresponding, or no production is corresponding to it. But after a dot, if there is a non-terminal symbol, we have to write the corresponding production of S. So how many production for S are there? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 productions here. So you have to write here. So first of all, I'm writing. I'm going to the next page and trying to write. Otherwise, it will no enough space is available over here. So see, some large box is required because there are multiple production over here. So first of all, S prime derives S, then S production we have to write. S, we have counted there are 5 productions, I think, for S. So we'll write them, right? So let's see what are those. So I go to the previous page. SS AA BSC. SS AA BSC. So I'll go to the next page. Then again write here with dots. Dot SS. Dot S also. Dot S. Uh, then SS. Okay, wait 1 second. AA BSc BC. BSc BC. So there are BSc. So dot BSc. So there is some space lacking. Okay. So I will expand this. Yeah. So now we can do again. So B A C. Okay, like this it was there. So you can see, because if some problem, small b a c, capital A small a, then capital B small c, capital B small c, capital B small c, and what was the previous one? Sorry.
previous, yeah. It was capital A, small a. So capital A dot with dot. Don't forget to write the dots. Capital A, small a, and then previous capital A, small b, capital B, small c, and small b, capital B, small a, small b, capital B, and small a was there, right? Small a was there. So this is what. And now we'll see again after a dot how many terminals are there. Yes, for S you have already written, so no need to write again. But we have to see here. Here means for identical symbols, no duplicate productions need to be written over the single step because already one S is there, so no need here. So if in the next step we have another S like here, then we have to expand. We'll see that. So for there, how many non-terminals are there? See A and capital A and capital B. These two are non-terminals. So we have to write the productions if given for these. And I think it's given already. So we'll go to the previous page and see D hash and B goes to or B derives at the rate. So dot D hash and what is the capital B? It goes to at the rate symbol. It is at the rate. Uh, I'll try to do this properly because so some A like this, okay, and circle. So it is at the rate. Now you have been asked, this is I naught, right? This is the first state or the I naught state. We have to determine that for I naught on I naught if we provide a symbol that is go to if like this it is given I naught comma s. Then if we provide a symbol over here or for s, where will I not transit to or it will go to which state? So or okay, first of all we need to determine that, and then we will able to identify or able to evaluate the number of items in that set or in that particular item in that set. This set I not this that set I that in a state of set of state. Okay, actually state and in this state is a set of items. So set of items in the set in that state in a stage or in the state will be able to identify. So see for S there will be something like this. Why I made it? I will say you. So if you give S, this dot will shift to this by one position and it will move to like it will cross this S and it will S dot. So it is done, no problem. But it is done, but you have to write this also, na? Because S, what is this? Whatever there is S, we have to shift the dot. On the RHS, not on the LHS, we have to consider the RHS. So see, there is also S over here dot S. So you have to write this also. And on writing this, if it is also S dot A, small a, nothing will be there, no change. Then the answer will be two items. But here you see S dot S, that is one non-terminal, another non-terminal is there. That is needed to be expanded again. So we have to write the all the production of S again, corresponding to this capital S. So this all the production you have to be written and corresponding to this 5 production. So these two are the extra extra production that are added first, and this all the existing will be copy and paste over here. The 5 productions will be there. Okay, if we label it as 2 3 dot 5, okay, 2 3 4 5 and 6, sorry, last one will be 6 and this one will be 5. If we label this production as Roman and this is 7 and this is 8. So 2 to 8, how many productions are there? 8 minus 2 plus 1, right? So 7 productions are there. So again, after copying this 5 production, you will realize that dot is there before B and capital A. Those are non-terminals. Again, these are productions need to be written. So 7. So 7 plus 2. See, 7 production and 2 extra productions are there because of this. Okay, so 7 plus 2 is 9. So answer was 9.
So if you go to the previous page, those answer will be number of items is 9 in the closer. Very easy question, not a very tough question. Very easy, or easy you can say. It's not a tough question. It is easy question for those who know the rules of how to compute the closure of items. Okay, closure of items in the parser, LR parser basically. And parsing table also you could have used, but no need. If anyone is so stupid to construct the parsing table, then that you can construct. It is not stupid, ever stupid. But for the terminals there, you need to do a shift reduce move, and for the basically the non-terminals, you want to give the go to move. Okay, go to action, go to action. Okay, go to action will be there. Okay, go to, just go to action, not a go to move, you can tell, and it is a shift reduce move. So this is all about this question. It was very easy. So I can tell one more question. This time it was asked that bottom up parsers, what are these also called as? In the options there are four options: LR0, LL1, shift reduce parser, and another was predictive parser. So we know that bottom up parser are LR0 parser, not a LL1, shift reduce parser, not the predictive ones. So these two options are correct. Okay, so two options are correct over there. If anyone thinks that ALL1 is a anyone thinks basically like that, it also could be LR0. It also, and it is within the LR parser, so it is a predictive parser. So LR or bottom up parsers could also be classified as predictive parser. In that context, he is right, but predictive parser in this also it is also known as, तो इसको तो हम नहीं बोलते ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन बी और ये दोनों करेक्ट है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरा हो गया था ये कंफ्यूजन, तो ये कंफ्यूजन माइंड से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने उसके बाद आकर स्टडी किया तो मेरे को लगा नहीं ये सही है, मतलब दो ऑप्शन ही होना चाहिए। देखते हैं आंसर की में वो IISc वाले क्या देते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है दो ऑप्शन ही देंगे, ठीक है, आपका ये नहीं देंगे, प्रेडिक्टिव पर्सन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द all about today, and if you want I can tell also कि another question was asked on the control flow graph. Okay, block basic blocks question on basic blocks कि कितने नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स होंगे, उनमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने होंगे, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा और एक में शिफ्ट वन में, ये शिफ्ट वन की बात हो रही है, इट वाज नॉट इन द शिफ्ट टू forenoon shift, it is a forenoon shift, not the afternoon shift. Okay, it's a forenoon shift. Forenoon shift में CFG control flow graph, it is not context free grammar, it is control flow, CON ना, control flow graph. So control flow graph से यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्या है आपका नॉन लीनियर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिक ब्लॉक्स कितने थे, वैसे पूछता है, ट्रेनिंग पैटर्न है। तो ये CFG हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो कि आपका हमारा बैच में हमारा पूछा गया था, CFG पूछा गया था, पर्सर के ऊपर एक पूछा गया, और दो क्वेश्चन आए थे, बात है आपको। एक तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, फास्ट फॉलो से एक आया था। हाँ, फर्स्ट एंड फॉलो प्रोडक्शन दिया गया था, फर्स्ट एंड फॉलो दिया गया था, और एक प्रोडक्शन में ब्लैंक प्रोडक्शन रख दिया गया था, मतलब एप्सिलॉन नहीं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 1 दिया गया था, दूसरे में 2। उनको अब बताओ कि क्या क्या होगा प्रोडक्शन, ठीक है, RHS वगैरह टर्म्स, ठीक है, ऐसा करके कुछ था, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉलो वाला। और तीसरा और एक क्वेश्चन था, मतलब देखो 3 नंबर का दो क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का 3 क्वेश्चन था, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, और जो बॉटम अप पर्सन जो मैंने पहले वाला देखा है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क का था। ये भी 1 मार्क का ही था, जो फर्स्ट एंड फॉलो वाला, लेकिन ये 2 मार्क्स का था, ठीक है। और एक था प्रोसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, उसमें आपका था 2 मार्क्स, ठीक है। और एक था आपका प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, वो भी एक वर्ड में पार्सिंग ही है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। बेसिकली प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी दिया हुआ था, उधर से आपको पैरेंथेसाइज या फिर ब्रैकेटाइज करना था, ब्रैकेटाइज करना था या फिर पैरेंथेसाइज करना था। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाना था। कहाँ पे लगाएंगे आप? ऐसे में मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन में भी एक पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम है, तो भी पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम था। तो और एक प्रॉब्लम था जो आया था, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पे नहीं, एच डी सिंटैक्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पे नहीं आया था, एच डी टी पे नहीं आया था। कहाँ पे आया था पता? हाँ, एच डी टी पे आया था, सॉरी एच डी टी पे आया था, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पे आया था, या फिर जिसको हम सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनेशन भी बोलते हैं, उस पे आया था। इसमें क्या दिया गया था, एक आपका बहुत सारा प्रोडक्शन दे दिया गया था, उधर से बोला था कि एम एम एल के करस्पॉन्डिंग आप निकालो, क्या निकालो? एमएमएल पे ये स्ट्रिंग था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या निकालो? अब इसका जो आउटपुट है वो निकालो, आउटपुट। तो इसको प्रोडक्शन यूज करके जो पार्सिंग यूज करना होता है, बटन अप पार्सिंग, तो उधर से आपको इसका आंसर मिल गया होगा अगर आपने ट्री सही से ड्रॉ किया है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का ट्री। तो जैसे पार्स ट्री, इसको बोलते हैं एनोटेटेड पार्स ट्री, या फिर पार्स ट्री भी बोल सकते हो, सीधा पार्स ट्री अगर आपने ड्रॉ किया है तो आपका आंसर आ जाएगा। एनोटेटेड पार्स ट्री भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्स ट्री बेसिकली इसको आप अगर सिंबलाइज कर देते हो तो एनोटेटेड होता है, तो मतलब डेकोरेट करते हो, तो एनोटेटेड पार्स ट्री अगर आप बनाते हो, प्लस यार प्रोडक्शन को फॉलो करते हो बॉटम अप वे में। और एक चीज कि रिवर्स ऑफ आरएमडी होना चाहिए, कि राइट मोस्ट डेरिवेशन जो होता है, राइट का सिंबल पहले होता है। जैसे सपोज आपके पास है एस गोस टू एस, तो मतलब ए एस को आप पहले एक्सपेंड करोगे, ठीक है, फिर एस से एल एम डी नहीं तो आर एम डी, तो मतलब आर एम डी का रिवर्स क्या होगा? पहले ये मतलब रिवर्स ऑफ आर एम डी यहाँ से शुरू होगा, फिर टू, फिर मतलब ऐसे करके, तो उल्टा ऑर्डर में कर देना है, ठीक है। अगर आर एम डी से ऐसे एक्सपेंड होता है, आपके पास ऐसा प्रोडक्शन है, एस गोस टू ए एस, एस है, एस दिया हुआ है, फिर आपका ए गोस टू स्मॉल ए दिया हुआ है, तो अब ऐसे इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? ट्री पास ट्री का कैसे बनेगा? तो कैपिटल ए एस एस, फिर क्या, इससे और एक बार आप लिखोगे ना पहले ए एस, और इसका क्या प्रोडक्शन है, स्मॉल बी है, तो फिर एस को बी करोगे, फिर ए को आप ए करोगे, ए को आप ए करोगे। तो इसका मतलब ये कैसा ऑर्डर हो रहा है? पहले आप यहाँ पे जा रहे हो, पहले आप एक्स को एक्सपेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, वन है, इधर फिर टू है, इधर फिर थ्री है, इधर फिर फोर है, इधर फिर फाइव है। तब इधर से उल्टा चलेगा, ये अब पहले वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, थ्री तो थ्री रहेगा, ये टू फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। रिवर्स ऑफ आरएमडी फॉलो करके इसका काम होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन का रिवर्स। तो इसको कंप्यूट करेंगे तो आंसर इज कमिंग अप टू बी 45, बिकॉज एम के लिए जीरो, एम के लिए जीरो, एल के लिए शायद 40 और के लिए 5, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, हाँ ऐसा ही था। या फिर 540 हो सकता है, थोड़ा ऑर्डर का मैं गलत बोल रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास डेटा उतना नहीं है उस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर वाज 45, यही क्वेश्चन है। और एक था ब्रैकेटाइज का क्वेश्चन का आंसर 6 होएगा, 6 होएगा, 18/3 दैट इज 6, या फिर 36/6 दैट इज ऑल्सो 6, लेकिन 6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन वगैरह वगैरह पूछा गया था कंपाइलर डिजाइन पे, शिफ्ट वन पे, जो काफी आसान था। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 8 में मेरे को पक्का 7 ही मिलेगा, मैं इतना बोल सकता है कि मैं अच्छे से पढ़ के गया था, 8 में 7 मिलेगा। तो ये मैंने ये यूट्यूब से पढ़ा था, यूट्यूब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका, मलेशियम सर से पढ़े थे, मलेशियम सर, मलेशियम सर से पढ़े थे, पढ़ सकते हो आप उनसे, और टीओसी और सीडी का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और शायद जो टीओसी भी उनसे पढ़ के गया, उस टीओसी का भी सारा क्वेश्चन लगा के गया है। तो मैं भी ये बोलना चाहूंगा, मैंने लास्ट मोमेंट पढ़ा पढ़ा था, इसलिए मेरा 1 मार्क चला गया। अगर लास्ट 2-3 महीना या फिर 1 साल पढ़ता तो 8 में 8 ही ला पाता मैं कंपाइलर डिजाइन में, इतना कॉन्फिडेंट में हूँ। तो मेरे को उसके बाद का कोई दुख नहीं है। तो यही तो नहीं बोलना था आज के लिए। इसके साथ मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप सबका बेस्ट विशेष के साथ। और आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक पक्का करना, अगर लाइक भी नहीं भी किया तो कमेंट करना, अगर कमेंट नहीं भी किया तो शेयर कर देना कम से कम, बीरू, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपने दोस्तों से प्यार करते हो, माँ बाप से प्यार करते हो, तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि इसको सारे लोग देख पाए और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बना पाए। मैं इसको सॉल्व नहीं कराया सीधा, मैं सीधा उसको शॉर्टकट बता दिया कि कैसे करोगे आप, ठीक है। मैं आपका अप्रोच नहीं बताया, मतलब अप्रोच बता दिया, सॉरी अप्रोच बताया, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं दिया, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं दिया, बस एक ही क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिया, बाकी का इन शॉर्ट हमने डिस्कस कर दिया। हम अगले वीडियोस में अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर लाइक टारगेट 10 का लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे, लाइक टारगेट में बस दे रहा हूँ आपको, आप 10 का लाइक करा दो इस वीडियो पे, मैं फिर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। CFG क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद ही कर सकता हूँ, और ये तो कर दूंगा, ये क्वेश्चन अभी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, CFG का नंबर ऑफ बेसिक। तो इसके साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया, तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना। तो इसके साथ एंड करते हैं। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।